आजादी के मौका पर यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से बड़ी आजादी ऑफर। अब यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हर प्रोडक्ट पर हासिल करें 50% फ्लैट डिस्काउंट। इस आजादी ऑफर में यूलर्न ऑनलाइन कॉलेज की फीस अब 60,000 के बजाय होगी 30,000 रुपए, जबकि यूलर्न सपोर्ट सिस्टम की फीस होगी 30,000 के बजाय 15,000 रुपए। सिर्फ यही नहीं, एमडी कैट और ई कैट के फुल कोर्सेज अब आप हासिल करेंगे सिर्फ 7500 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्दी से इस आजादी ऑफर से फायदा उठाएं और तालीम हासिल करें एक नए अंदाज में। यूलर्न, चल पड़ो कामयाबी की जानिब। जश्न आजादी के मौका पर यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से बड़ी आजादी ऑफर। अब यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हर प्रोडक्ट पर हासिल करें 50% फ्लैट डिस्काउंट। इस आजादी ऑफर में यूलर्न ऑनलाइन कॉलेज की फीस अब 60,000 के बजाय होगी 30,000 रुपए, जबकि यूलर्न सपोर्ट सिस्टम की फीस होगी 30,000 के बजाय 15,000 रुपए। सिर्फ यही नहीं, एमडी के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फैसल मुनीब हुसैनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद इस तगोदो में होंगे कि अब किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, कहाँ पर मेरे दोस्त जा रहे हैं, किस तरह से मैं अपनी जो 2 साल की एफ़र्ट्स हैं उनको फ्रूटफुल बना सकता हूँ अपने लिए। ये बहुत सारे सवाल इस तरह के आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो आपके लिए मैं एक पैकेज लेके आया हूँ, एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि यूलर्न अब ऑनलाइन कॉलेज बन चुका है, फेडरल बोर्ड की तरफ से रजिस्टर्ड। मतलब कि आप अब अपना एडमिशन भेज सकते हैं यूलर्न के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब ऑनलाइन घर बैठे आप सारी की सारी एफएससी कर सकते हैं, और वो कोई प्राइवेट एफएससी नहीं होगी, वो रेगुलर एफएससी होगी। आपको डिग्री फेडरल बोर्ड की तरफ से मिलेगी, जो कि पंजाब बोर्ड से या किसी भी और बोर्ड से बहुत बेहतर भी है, और उसकी जो एंड एवेल्युएशन है वो भी बेहतर है। फिर उसके बाद आप जब घर बैठे पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत सारी साइड हसल्स भी कर सकते हैं, अपने लाइफ के एम्स को हासिल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। तो अभी आपने देर नहीं करनी, यूलर्न के पेज पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। और जब आप फ़ी देखेंगे तो वो इतनी कम फ़ी है कि आपको पूरा साल वो फील भी नहीं होगी कि आप कुछ पे भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और यूलर्न आपको किस तरह से सारी की सारी एफएससी करवाएगा, किस तरह से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ दिखाने के लिए यूलर्न का प्लेटफॉर्म आपको प्री एफएससी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है। हर जो मेन सब्जेक्ट है उसके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम किस तरह से फिज़िकल क्लास से बेटर इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से आपको तमाम की तमाम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें बाकी सब इदारों से, बाकी सब के सब जो हमारे पास डिफरेंट इदारे मौजूद हैं उनसे मुमताज़ करती है, उनसे हमें सेपरेट करती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि यूलर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है एसएलओ बेस्ड लेक्चर्स। मतलब कि हम हर टॉपिक के साथ उसके एसएलओज भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, और उस एसएलओ के थ्रू जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि मेरे पास आज लेक्चर जो हमने पढ़ना है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इस लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, क्या एसएलओज हैं, क्या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं इस लेक्चर की, वो बहुत सिंपल हैं। इस लेक्चर की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता हो ये क्या भला है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, और फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चीज़ हमें इस टॉपिक में सीखनी है। ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की नो हाउ
अपने पास रखनी है, मुझे पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, इसकी नीड क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। अब मुझे डायरेक्शन भी शो करनी आ गई कि किस तरह से मैं वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके। अब इसी एसएलओज में से क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, तो क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपको पता है कि फेडरल बोर्ड और बाकी तमाम जो पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब जितने भी हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो तमाम के तमाम जितनी भी असेसमेंट्स आएंगे, एग्जामिनेशंस होंगे, वो एसएलओ बेस्ड होंगे। यानी कि आप वो बुक का जो लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन की वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, उसमें कोई हेर फेर कर दिया जाएगा, थोड़ी सी ट्वीक कर दी जाएगी स्टेटमेंट कि आपको कंफ्यूज किया जाए। आपको अगर कंसेप्ट होगा, नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एप्लीकेशन का पता होगा, तो ही आप असेसमेंट को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो मेरे लेक्चर्स के अंदर तमाम के तमाम टॉपिक्स के एसएलओज इतने डिटेल से डिस्कस हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं लेक्चर के अंदर ही कि किस टॉपिक में से क्या कुछ पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें से भी 3 किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नॉलेज बेस बन सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस बन सकते हैं, एप्लीकेशन बेस बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। आप इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसानी होगी। या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप उन स्क्रीनशॉट्स को देख के इन्हें नोट कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन, अगर 2D प्लेन है और उसमें हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन स्पेस, अगर स्पेस में कोई वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को किस तरह से हम मेंशन करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो एप्लीकेशन में है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस तरह से हम निकालते हैं, किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट किस तरह से हम रेफ़र करते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये एक तीसरा मेथड है जो कि यूज़ होता है डेली लाइफ के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, जिससे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको आ गए लेक्चर के दौरान, इन चीज़ों की अगर आपको समझ आ गई, इट मीन्स आपको ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर क्लियर है। अब चूंकि मैंने भी आपको खुशखबरी दी कि यूलर्न अब फेडरल बोर्ड से रजिस्टर्ड कॉलेज बन चुका है, तो ये आपको किस तरह से प्रोवाइड करेगा अंडर वन अम्ब्रेला ऑल ऑफ योर सॉल्यूशंस। तो हम आपको 2 तरीके से आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें आपकी अटेंडेंस भी मैंडेटरी होगी और वो आप अपने घर बैठे अपनी ईज़ में वो लेक्चर्स आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यूलर्न आपको प्रोवाइड करता है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑल इन वन सॉल्यूशन है आपकी हर प्रॉब्लम का जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में आ सकती है। मैं फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की बात करता हूँ। जब आप अपने आप को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए। अब इन गिवन सब्जेक्ट्स में से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसका जो आउटलुक है वो नज़र आएगी जिसमें तमाम के तमाम चैप्टर्स सारे के सारे पढ़े हुए हैं। ये आपकी असिस्टेंस के लिए है कि अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर में लेक्चर समझा और आपको कोई कंसेप्ट रह गया और वो आप पूछ भी ना सके, हालांकि ऑनलाइन में आप किसी भी टाइम अपना माइक ऑन करके आप कमेंट में पूछ के टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके आप पूछ सकते हैं। इसमें वो माहौल नहीं है कि क्लास में बैठा हूँ, अगर मैंने अपने टीचर से कोई सवाल पूछ लिया तो बाकी दोस्त हंसने ना लग जाएं मुझ पर, या वो नाराज़ ना हो जाएं, या टीचर बुरा ना मान जाए। ये वाली तमाम बातें साइड पे, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप टैब पे, लैपटॉप पे आप लेक्चर ले रहे हैं और आपको एक कंसेप्ट समझ नहीं आया, आपको एक बात समझ नहीं आई टीचर की, तो आप वहीं पर माइक ऑन करके कह सकते हैं कि सर मुझे ये वाली बात दोबारा समझा दें। अगर फिर भी
कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है या आपने रिवीजन करनी है, पूरे चैप्टर का टेस्ट आ गया और पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है, एक गो थ्रू लेना है, तमाम कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर मेजरमेंट के कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं, तो मैं मेजरमेंट के चैप्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस चैप्टर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास तमाम टॉपिक्स की लिस्ट है जितने भी इस चैप्टर में मौजूद हैं, और किसी भी आप टॉपिक पे क्लिक करें तो उसके साथ उसकी वीडियो खुल जाती है और नीचे आपको टैग नज़र आ रहे होंगे कंटेंट का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्विज़ का और ग्राफ का। ये टैग्स क्या है, ये किस तरह से आपको रिवीजन में असिस्टेंस करते हैं, ये किस तरह से डिटेल्ड आपकी हेल्प करते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को करने के बाद, देखने के बाद मुकम्मल तौर पर 100% एफिशिएंटली प्रिपेयर होंगे कोई भी टेस्ट में अपेयर होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वीडियो देखी, मुझे इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद मैं इसके कंटेंट देखना चाहता हूँ तो मैं कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा तो इस टॉपिक के नोट्स मेरे पास आ जाएंगे जिनसे मैं ये तमाम चीज़ें याद कर सकता हूँ। जब ये नोट्स मेरे पास आ जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के टैब पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे विद आंसर्स आएंगे, जिनको आप अगर फॉर एग्जांपल किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ आया, आप अपने टीचर से डायरेक्ट आस्क का क्वेश्चन, ये ऊपर हमारे पास इस जगह पर इसका ऑप्शन बना हुआ है कि आप अपने टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो डायरेक्टली आप पूछेंगे, वो मेरे पास क्वेश्चन आएगा और मैं उसका फ़ौरन आंसर करूँगा कि जी इस टॉपिक में ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसका आंसर इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आप क्विज़ के टैब पे क्लिक करते हैं तो प्ले क्विज़ का बटन आ जाता है। इस प्ले क्विज़ के बटन पर क्लिक करने से आपकी एक अलग विंडो ओपन होगी जिसमें सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs होंगे। आपने इन MCQs को सॉल्व किया, आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, आपने असेसमेंट दी, आपने वीडियो देखी, तो फिर आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरी इस चैप्टर में प्रोग्रेस क्या है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे दोबारा समझ लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि मुझे वीक है अभी और मैं जब टेस्ट में अपेयर होना चाहता हूं तो वो टॉपिक मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो उसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट है कि जी ये टॉपिक है, इसके आपने इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इतने ठीक किए, इतने % आपके मार्क्स हैं, आपको इतनी मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने इतना टाइम इस पर स्पेंड कर लिया हुआ है, इतना टाइम मज़ीद आपको स्पेंड करना चाहिए, एक्सेट्रा। ये हमारा LMS था। अगर आपने इस पर अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो मैं आपको कहूँगा बीइंग अ टीचर ये सबसे अच्छा मशवरा है आपको। मार्केट में किसी महंगे फ़ीस वाले कॉलेज को पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमल फ़ी के साथ अभी यूलर्न को ज्वाइन करें। ये LMS की सारी एक्सेस आपको दी जाएगी और इसको तमाम LMS को आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और चीज़ों को आप स्टडी भी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप वक्त से पहले कवर भी कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं और SLO बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम LMS के फीचर्स थे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो गाहे बगाहे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन अगर आपने, दोबारा कहता हूँ, अगर आपने यूलर्न के LMS पर रजिस्टर नहीं करवाया तो जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम से पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करना है जो मैंने कल पढ़ाया था कि हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। सिंबॉलिकली का मतलब तो ये है कि मैंने एक वेक्टर शो करना है, फॉर एग्जांपल v है, सादा v लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो v मैंने लिखा है ये स्पीड को शो कर रहा है। और अगर मैं v के ऊपर वेक्टर का सिंबल डाल दूं तो इसका मतलब है कि ये शो कर रहा है वेलोसिटी को, ये वेक्टर बन गया। अब ये तो सिंबॉलिकली है, मैंने आपके सामने सिर्फ v लिखा हुआ है। डू यू हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट? डू यू नो द वैल्यू ऑफ इट? नहीं।
जस्ट रिप्रेजेंट किया है कि ये वेक्टर है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये वेक्टर है। इसकी वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो मैं उसको, एक तो हल ये है कि मैंने लिखा v वेक्टर इक्वल्स 3 मीटर पर सेकंड और मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्यू नॉर्थ वाली साइड पर 3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बता दी। अब ये जो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक और वेलोसिटी की वैल्यू है। लेट्स कंसीडर वी हैव अनदर वेलोसिटी विच इज़ 4 मीटर पर सेकंड एंड ड्यू साउथ। उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ है। If I want to add both of them, let's say it's V1 and it's V2, and I want to add V1 plus V2, what I can do, I can simply add the magnitudes and the directions separately. Up to the magnitude, it's very simple. You can simply add 3 plus 4, it can be 7. But how can you add directions as well? We have never thought about that. We have never added the directions before in our previous classes. So how do we add them? So there must be something else. There must be a process to add them. Yes, we do have the process, and the process is called head to tail rule. We do add vectors by using head to tail rule. But before using that method, you must need to represent a vector graphically. You cannot add them symbolically. So let me write it for you. You cannot add vectors symbolically. You must write them, you must represent them in graphical notation. Okay, so do we have graphical representation? Yes, we do have graphical representation. For the graphical representation, if I recall, we need a line whose length will represent the magnitude and whose head represent the direction. So what it is? Do you represented the V1 through this vector or V2 through this vector? It depends on the length of the line that I have made. So to represent the length of the line referring to the velocity, we must write a scale. And the scale shows, for example, let me give some values for that. For example, I took the scale as 1 centimeter on my page equals 1 meter per second. Then this line must be 3 meter per second or the 4 meter per second. जो स्केल हम सेट करेंगे उसी के मुताबिक हमने लाइन की लेंथ लेनी और जो हमारी डायरेक्शन होगी हेड उस तरफ होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने ये लाइन लगाई है तो ये लाइन का जो हेड मैंने बनाया है ये नॉर्थ की तरफ होना चाहिए if I am representing the V1 vector here. Okay, clear? So we do have two methods, graphically and symbolically. So to write vectors and to add vectors, we know that we have to deal them in graphical manner. But to overcome the problem of adding many vectors at a time, we must have a generic scale. To provide a generic scale, we have a Cartesian coordinate system. So what Cartesian coordinate system offer us? What Cartesian coordinate system is? So it is a reference system used to represent a vector graphically in plane or space. So this is a reference system that we have developed to represent vectors. And in mathematics, definitely there are more uses related to the Cartesian coordinate system, but for now we are related to vectors only. So what else a Cartesian coordinate system has? A Cartesian coordinate system has a scale. Okay, so I must have a scale
represented in a Cartesian coordinate system. It can have two or three perpendicular axes. It can have two or three perpendicular axes. Okay, that's good, that's nice. What do we mean by perpendicular axis? We mean by that, if you have to write down your scale, just draw a line, draw another line, and keep in mind that these lines should be perpendicular to each other. These lines should be perpendicular to each other. So we have drawn two lines that represents the plane, and this plane consists of two lines. One axis we name that the horizontal, and also we also name it as x-axis. The right side of this is positive x-axis, and the left side after the central point we have negative x-axis. The other line is called the vertical because we have drawn it vertically, and the other name is y-axis that we commonly use for it. The above side is positive y and the downward side is negative y-axis. So these are the names of the lines. They can be three as well, because if we want to represent the space in this as well, so we have to draw a third line perpendicular to this as well, and I have drawn it along the diagonal just to show that it is out of the plane. That means it will be towards you and it will be towards me. The towards me side is positive z-axis, and towards you side will be negative z-axis. So it's the space line, it's in the space. So we can have three or we can have two lines to build a Cartesian coordinate system. How do we represent the scale on this Cartesian coordinate system? Definitely the scale is defined on the same manner that we have used previously, that 1 centimeter will be equal something. Similarly, we can put marks of centimeters or the inches onto the lines, and that mark will represent the scale that we have been using for this Cartesian coordinate system. Okay, that's clear? This Cartesian coordinate system is being divided into four segments if we are talking about the plane. And these four segments are called four quadrants. Namely, the first quadrant, this is first one. The second quadrant, this is second one. The third quadrant, this is the third one, and fourth quadrant, this is the fourth one. So we have four quadrants in the Cartesian coordinate system. So this is the structure of the Cartesian coordinate system, and you must know the structure, that we always refer something through that structure. Let's say you have a vector and you can say that it's in third quadrant, so we are talking about this segment. If it is in first quadrant, we are talking about this segment. And you can also see about the axis, about the reference lines of the vector. In the first quadrant, the x is positive, the y is positive, so both of the quadrant, both of the reference lines delivers a positive number. On the second quadrant, x is negative and y is positive. On the third quadrant, both are negative. In the fourth quadrant, x is positive and y is negative. So this will help you a lot to represent a vector in a new way that I will discuss shortly. So this is the Cartesian coordinate system. Now the most important talk, how do we represent a vector in Cartesian coordinate system? By representing the magnitude as well as
by representing the direction. So we must have some method to add directions, yeah. So we need to represent the direction as well. So consider that you have a Cartesian coordinate system. Let me draw that again for you. This is our Cartesian coordinate system. I am not writing all the things again, just to make a reference. It is x-axis and it is y-axis. And we have a vector in this Cartesian coordinate system. This is a vector. Let's say it is a vector A. So the length, again, the length of the line will represent the magnitude, and this magnitude will be calculated according to the points that we have drawn on the axis. Now about the direction. So in plane, we represent the direction of a vector by single angle, by only one angle, which is always taken from positive x-axis. Do remember that. And write it, note it as well. The direction is represented by angle. How many angles? Only one. And what are the attributes for this angle? The attributes for this angles are, the angle must be from positive x-axis and the angle must be taken in counter-clockwise, anti-clockwise. So we always count the angle in anti-clockwise manner and starting always from the positive x-axis. For example, you have to represent another vector, and this is the vector that we are going to represent. So what will be the angle for that? The angle for that will be started from the positive x-axis and will end at the line, and this angle will be counted in negative counterclockwise direction, the negative direction. So this will be the angle that is represented for this vector. So wherever vector is, you must start from positive axis and in counterclockwise direction. Let's consider another example. If we have a vector in the fourth quadrant, so this is our fourth quadrant. Now what will be the angle to represent this vector? So definitely we can calculate the angle from this side, from positive axis, but this is not the angle that we are going to represent. Why? Because it is not in anti-clockwise direction. The angle must be in anti-clockwise direction. Do remember that. किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए वो एंगल जो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, वो एंगल जो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, उस एंगल को मेजर करने के लिए दो शराइत हैं, दो कंडीशंस हैं. Those conditions are, the angle must be starting from positive x-axis and angle must be calculated in anti-clockwise direction. To represent this vector's direction, I have to start from this line all the way along to this point. So this will be the angle theta that will represent the direction of this vector. Clear? You don't have always vectors starting from the central point, and this central point we call it origin. Do remember that. If you have a vector like this, this is the vector that I am going to represent. So what will be the direction? It's not at the origin. And how can I calculate its direction from the positive x-axis? So you see, when we have such situation, we have to imagine a positive x-axis here. So this is my positive x-axis. I have created a dotted line because just to represent an imaginary line. It's not the real line. We have to imagine that. And then angle from that imaginary line will be the angle of this vector. So it's not the compulsory or mandatory to start a vector from origin always. You can have the vectors that are not starting from the origin. So the simple thing you can do is just imagine a positive x-axis and calculate the angle from that positive x-axis. That's it.
And do remember one more thing. If you place this vector, just pick that up and place this vector at another place. Let's say this is the vector again, the same vector, same length, same direction. It will not change. When you replace the vector in a Cartesian coordinate system at a new position, it remains same. It remain same. Okay. So changing the position in coordinate system does not affect the magnitude and the direction. And why do so? Because we are always calculating the angle from positive x-axis and we have the same length of the vector. So length representing the magnitude, that means its magnitude will be constant. The magnitude here is equal to the magnitude here, and the direction is here is equal to the direction here. Let's imagine another positive x-axis here, and this is the theta that will represent the direction, and it's same as before. Okay, so these are the important things. Now talking about the angle, one more thing you must realize. We may come across with a formula which can be such that angle theta equals tan inverse y over x. We will talk about the how we calculated this formula. We will talk about this later. But for now, you have to remember one thing. This function in calculator, the tan inverse, whenever you input the tan inverse in calculator or any computer, it will give you the angle from nearest x-axis. It will not consider that you want to have the angle from positive x-axis. It will only see the nearest x-axis, and it can be in any manner, can be clockwise, can be anti-clockwise. What do we mean by that? For example, you have a vector in the third quadrant. So for third quadrant, what must be the angle? It should start from positive x-axis and end here. This must be the angle theta for us. But when you put in the values in the calculator and use this button tan inverse, it will give you the nearest x-axis. So the x-axis near the vector is, for now, not this vector, is in fact this angle. So it will count the angle from negative x-axis instead of positive x-axis. Second thing, it will not take the consideration of anti-clockwise direction. It can be in clockwise direction as well. So this will be the angle phi that we will have in this expression, and this is not the angle through which the vectors are represented. So do remember this point. Whenever you are using calculator, जब भी आप calculator का इस्तेमाल कर रहे हों, तो don't rely on the value only. Always seek for the real angle. The real angle is always starting from positive x-axis, always in counterclockwise direction. Again, listen again and listen carefully. The angle which represents the direction of the vector, must start from positive x-axis and should be in counterclockwise direction. Okay, clear? Now talking about the vector's direction in space. तो space में अगर मैंने vectors की direction को represent करना है in space, so you do know that in space we have three axes, x, y and z, horizontal, vertical and upward or downward. So to represent the direction, we need not only one, we need three angles. How can we make three angles? Consider again you have a Cartesian coordinate system, but now it's representing the space.
So we have drawn the third line here. Both the three lines are perpendicular to each other. This one is z-axis, this one is y-axis, and this one is x-axis. And we have a vector in the space. So let's consider we have a vector here. So to represent its direction, you must have three angles. One from x-axis in any direction, doesn't matter, but it should be from x-axis. One from y-axis in any direction, but it should be from y-axis. Let's call this alpha, it's beta. And one from z-axis, let's call it gamma. So you need three vectors, three angles to represent the direction of a vector in space. And what is the condition for these three? The condition for these three is they must satisfy cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma must be equal to 1. This is the important condition that we have for these three angles. That means you cannot take any value of these three angles. You cannot consider any value of these three angles. For example, let's say I am assuming the values of these three angles, and I have assumed that the alpha is 45 degree, the beta is 55 degree, and gamma is 60 degree. So these values are not possible. Why? Just put in these values, alpha 45, beta 55, gamma 60. Use that equation. If they are equals 1, then you can have these values. But if they are not equal to 1, these angles are not possible. Only the set of angles is possible which will satisfy this equation, the cosine law. Again, to remember that only the angle, only the set of three angles that will satisfy this equation will be able to represent the direction of a vector in space. Otherwise, the set of the angle is not possible. And there are many questions in the examination that comes through this concept, like which is the possible set of angles to represent a vector, and you have different values 45, 55, 60, 30, 30, 60, 45, 45, 90, etc. So to check the values existence, do the set of the angles is true or not, just put in the angles in this formula, use your calculator. If you are getting 1, then the set of angle is true. If you are not getting 1, then the set of angle is not true. So what is the major difference between mentioning the direction in plane and mentioning the direction in space? The number of angles. In plane we do need only one angle. That angle always start from positive x-axis and counted in counterclockwise direction. And in space you need three vectors, three angles. The three angles can be in any direction. It can be clockwise, it can be anti-clockwise. But one should be from x-axis, one should be from y-axis, and one should be from z-axis. So these are the main important discussion points that you must know. You must have the understanding about them. And one more important point is that whenever you are using the calculator, for example, I am using the calculator here, and I have found a way to calculate the angle which is tan inverse. We will talk about this in later lecture. But for now, do remember that whenever you are using this function, it will not give you the required angle. Just to remember that till now, it will not give you the required angle. It will give you the angle from nearest x-axis, but you always need the angle from positive x-axis. And this will give you the angle in any manner, counterclockwise or clockwise, but you always need a counterclockwise manner to calculate the angle to represent the direction of the vector. Okay, so these are the very important point that you must know in Cartesian coordinate system. Now we have Cartesian coordinate system, and what can be the another way to represent the vector rather than symbolically or graphically? We have another way here.
the Cartesian coordinate system just created a path, a shortcut for us, that we don't have to draw all the time vectors graphically to add them, because we can use the Cartesian coordinate system and use its reference system to represent the vectors by coordinates. This is very important because we will be adding and dealing with vectors that are written in the coordinate manner. I will explore that concept in more detail in later lectures. For now, I am going to tell you only one thing. For example, if you have a vector in a Cartesian coordinate system, just for example, you have a vector here. So you have a value from x-axis, which is a, and you definitely have the value from y-axis, which you can specify as b. So you can write this vector using this value a and b. The method is the vector v is equal to a in x direction plus b times in y direction. So I am not giving you the complete detail unless we are through the topics and more knowledge, but you must have an idea. The Cartesian coordinate system, what is the benefits of using Cartesian coordinate system? You do know that whenever we have to add vectors, we have to subtract them, we have to manipulate them, we have to apply arithmetic principle to them. We must use the graphical method. And graphical method is a hectic process when we always have to draw the lines, we have to do some geometry, we have to deal with the things, and it is a time-consuming method. Do we have a shortcut? Yes, we have a shortcut. What it is a third type of representation, which is the representation through the rectangular components, the coordinates. And that representation is only possible due to Cartesian coordinate system. I hope I make the sense for you, and this is the lecture from my side. मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जश्न आज़ादी के मौका पर यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की जानिब से बड़ी आज़ादी ऑफर। अब यूलर्न ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हर प्रोडक्ट पर हासिल करें 50% फ्लैट डिस्काउंट। इस आज़ादी ऑफर में यूलर्न ऑनलाइन कॉलेज की फीस अब 60,000 के बजाय होगी 30,000 रुपए, जबकि यूलर्न सपोर्ट सिस्टम की फीस होगी 30,000 के बजाय 15,000 रुपए। सिर्फ यही नहीं, MD कैट और E कैट के फुल कोर्सेज अब आप हासिल करेंगे सिर्फ 7500 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्दी से इस आजादी ऑफर से फायदा उठाएं और तालीम हासिल करें एक नए अंदाज में। यूलर्न, चल पड़ो कामयाबी की जानिब।